Hello guys, good evening. How are you all doing? I'm Palak Thakkar from IELTS Made Easy and I'll be taking care of your writing module today. So how are you all doing? Good evening to all of you. Those who are new, let me give you a brief introduction of our channel to you guys. We at IELTS Made Easy are conducting free live online classes every day for you guys. The schedule of this session is at 12 p.m. that is in the afternoon. We take classes for reading and listening, and at 9:30 p.m. that is in the evening or the night time you can say, we take classes for writing and speaking. So these sessions are with the detailed explanation of the task along with the vocabulary improvement, and you can clear all your doubts regarding these respective modules in the chat section during the live sessions. Okay, so today we will be doing academic writing task 1, and a good hi to everyone. How are you all doing? Hello Mansi, hi Manpreet, hi Simranjeet, Sumandeep, good evening, how are you? Harvinder, good evening. Manpreet, Nibri, hello Flora, hi Sukhpreet, hello Sumandeep, Manpreet, good evening Ankush, how are you doing? Hi Innocent, good evening. Hi Mona, hi MM Builders, hello Gurjeet, Amrit, Sumit, Venus. I hope you all are doing good. Nirbhay, hi, I am Palak Thakkar and we will be studying academic writing task 1. If you are new, if you wish to visit our writing task 1 playlist, you will find a lot of videos related to all modules, and these are specific videos related to writing task 1. Those who are new, you can see these videos created by Sonam ma'am in our writing task 1 playlist for your respective uh, answers or respective format for these kind of charts, right? And stay connected till the end so you will be clear with the academic writing task 1, those who are new. Hi Ankush, hi Prem, Rajni, hi Sumit, Sukhpreet, Lavish, hi Smith, hi Rohit, good evening. So a good warm welcome to all of you. Now quickly let's discuss about the academic writing task 1. These are the type of questions which are usually asked in the IELTS exam: bar chart, line graph, pie chart, table, flow chart, process and diagram, right? So out of these, bar chart and line graph are somewhat similar when it comes to writing. Then pie chart and table are somewhat similar because those are usually with the percentage kind of data. Flow chart and process are almost similar in terms of writing, and the diagrams or maps, that's a different type of question, right? So you at least need to learn 4 types of question to write so that you can write all 7 kind of writing task 1s. Okay. Now what is the format for writing task 1 which we follow? The first thing we write is introduction, then comes your overview, and then comes your body paragraph. This is the first format. Second format is, first we write introduction, then body paragraphs, and then at the end the summary. Now overview and summary, these are the options. You have to just write one. Either you will write it after introduction, that will be overview, or you will write it after your body paragraphs, that will be your summary. But the content of both the paragraphs would be same. So अगर आप overview लिख रहे हो, आप summary नहीं लिखोगे, आप summary लिख रहे हो तो आप overview नहीं लिखोगे, ठीक है? कंटेंट दोनों का सेम रहेगा, खाली पोजीशन में डिफरेंस है. इंट्रोडक्शन के बाद लिखोगे तो ओवरव्यू एंड लास्ट में लिखोगे तो समरी. नाउ लिखना क्या है उसके अंदर? इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है. क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके अपने टर्म्स में लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे, दैट इज योर इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज ओवरव्यू. ओवरव्यू में क्या लिखोगे? 2 की फीचर्स, 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एंटायर ग्राफ विल बी योर ओवरव्यू या समरी, जो भी आप लिख रहे हो, राइट? एंड देन बॉडी पैराग्राफ, उसमें आप डिटेल में डेटा मेंशन करोगे. ओवरव्यू या समरी में आप कोई भी फिगर या नंबर मेंशन नहीं करोगे, राइट? यू विल नॉट मेंशन एनी फिगर और नंबर in your overview. Okay, now today we are going to do a bar graph. So this is the question. All right guys, hello to everyone. Now stop sending highs and hellos. Let's focus on the charts. Good evening, hello everyone. Now let's focus on the chart and let's focus on the questions.
Okay. Harpreet, you can't use slang in your speaking. Gestures, of course, you can make. Okay. Now, read the question. The graph presents percentages of commuters. Quickly tell me the meaning of commuters. जिनको पता है, quickly write in the chat box. Right? So, the graph presents percentage of commuters using different mode of transport in London in years 1960, 1980, 2000 and 2010. So, these are 4 years in which percentage of commuters are using different modes of transport in London, right? So quickly मुझे commuters का meaning बताओ जिनको पता है in the chat section. Okay guys, no other chats rather apart from the writing task, no other discussion will be happening in the chat box, otherwise I'll have to block you guys. Okay. Yes, Mansi, you can of course do that. Nagita, yes, passengers. Mohit, yes, travelers. Palak Mehta, passengers, correct. Right, so passengers, travelers, Vipin, Sandeep, travelers, but spelling दोनों के wrong है, so just check for the spellings. Rest जो आपने suggestion दिया है, traveler, passenger, these are the exact words for commuters. Visitors, visitor आप इस case में use नहीं कर सकते हो, because visitor is someone who is traveling to your place from somewhere outside, right? That is a visitor. But यहाँ पे daily communication, सॉरी नॉट कम्युनिकेशन, डेली ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है कि डेली लंदन के लोग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, राइट? सो विजिटर विल नॉट बी अ प्रॉपर वर्ड हियर. विजिटर और ट्रैवलर और टूरिस्ट ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होंगे, बिकॉज ये डेली जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसकी बात हो रही है. ठीक है. नाउ सी, देयर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर. फर्स्ट इज ट्रेन, सेकेंड इज कार, थर्ड इज ट्यूब एंड फोर्थ इज बस. सो ये 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से लंदन के लोग इन 4 इयर्स में 1960, 1980, 2000 एंड 2010 में जो ट्रैवल कर रहे हैं उसका डेटा आपको गिवन है. ओके, आई विल अगेन रिपीट, विजिटर या लाइक टूरिस्ट वो वर्ड आप यूज नहीं करोगे. ट्रैवलर आप कर सकते हो, पैसेंजर आप कर सकते हो. ओके. Harpreet, commuters are not the person who drive the vehicle, who travel from one place to another using some mode of transport. जरूरी नहीं है कि वो ड्राइव करे, वो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट कुड बी अ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल, तो वो यूज करके वो डेली कम्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स डेली ट्रैवल कर रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं, राइट? सो दैट वर्ड यू कैन यूज. इट्स ओके मानसी. ऑलराइट, सो migrants, no, Navdeep and there was one more, Navdeep. Migrants would not be the word. Migrant मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं परमानेंटली या फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ये उन लोगों की बात है जो डेली कम्यूट कर रहे हैं फॉर सम पर्पस, फॉर वर्क पर्पस और फॉर एनी अदर पर्पस, राइट? सो आप माइग्रेंट्स या टूरिस्ट ये वर्ड यूज नहीं करोगे, राइट? यू कैन यूज पैसेंजर्स, you can use travelers in place of commuter. Now, those who have attended the previous session, quickly form a introduction for this question. Those who have not, wait for a few minutes. I'll let you know how to write a proper introduction. Okay, so some people have already started. Neha, the bar graph illustrates the information about the proportion of travelers who were using tremendous modes of transport in London in the 4 different years. Now, tremendous means बहुत सारे, right? Here there are 4 modes of transport. So, various modes of transport would be a proper word in place of tremendous. Rest your introduction is correct. Aditya, yes, tube means it's kind of metro. It's the London Underground. London में there's an underground train which is running, जिसे वो लोग like in short, yeah, in the common language they call it tube, right? So, it's kind of metro.
Vipin, you will get the task on the Telegram, don't worry, at the end of the session. Okay, Ritika, the bar graph illustrates about the passengers who are using diverse range of vehicles in London during 1960, 1980, 2000 and 2010. एक year आपने miss किया है Ritika, rest your introduction is good. Sandeep, the line graph illustrates the different types of transport system being used by travelers in London city, and London L will be capital in respective years. Okay. Rest is correct. Jia, the graph, the given, you don't have to write the word given in your introduction, right? So simply the bar graph illustrates the proportion rate. Now proportion के साथ आपको rate लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ proportion लिखो of travelers using various mode of transportation including train, car, tube, bus in London in the year 1960. अब या तो various modes of transport लिख लो या तो नाम लिख लो, choose any one. बहुत lengthy हो रहा है, ठीक है? So उसको आप cut short करो. लवप्रीत, yes, ट्यूब इज काइंड ऑफ मेट्रो जो लंदन में चलती है, राइट? रोशनी, द ग्राफ इलस्ट्रेट रेशियो ऑफ ट्रैवलर्स यूजिंग varieties of modes of various modes of transport in London in year this. Okay, London L capital. All right, so those who are new, आपको इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन में जो लिखा है यू हैव टू सिंपली पैराफ्रेज दैट थिंग. ग्राफ का नाम आप इंक्लूड करोगे. सो हियर वी हैव बीन गिवन अ बार ग्राफ या जिसे कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, राइट? सो द बार ग्राफ प्रेजेंस की जगह पे यूज सिनोनिम illustrates, demonstrates, depicts, describes, elucidates, represents, presents, compares, gives information about, tells us about. These are the synonyms you can use for present. Now percentage की जगह पे आप fraction लिखो या ratio लिखो. So ratio of commuters की जगह आप traveler लिख सकते हो, passenger लिख सकते हो. Using different mode of transport, so various mode of transports, or using car, train, bus and tube in London in year 1960, 80, 2000 and 2010. Years को आप change नहीं कर सकते, जगह को change नहीं कर सकते. बाकी जितनी चीजें हैं आप उसके synonyms use करके you will frame your introduction. Okay, so this is how you will write your introduction. You will get a lot of samples in the chat box. Those who are new, so आप उनके भी examples refer कर सकते हो. I'll show you a sample answer as well कि आप किस तरीके से आपका introduction फ्रेम करोगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द ओवरऑल पर्सपेक्टिव. ओवरऑल में हम क्या लिखते हैं, टू की इंफॉर्मेशन. नाउ इफ यू आर गिवन टू डिफरेंट ग्राफ्स तो आप दोनों ग्राफ में से एक एक की इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, बट आपको यहाँ पे एक ही ग्राफ है तो एक ही ग्राफ में से यू हैव टू फाइंड आउट टू की इंफॉर्मेशन, राइट? सो ये ग्राफ को स्टडी करो किसके कितने परसेंटेज है कौन से ईयर में, एंड क्विकली लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि यहाँ पे ओवरव्यू या ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप क्या लिख सकते हो. टू की फीचर या टू इंपॉर्टेंट फीचर जो पूरे ग्राफ में आपको लगता है दैट दिस इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट में क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट, लोएस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड. These type of things you have to write in your overview, right? So quickly observe the chart and tell me कि आप overview में क्या लिख सकते हो. Meanwhile, I'll check 2-3 more introductions. Okay? Maharaja, the introduction. Graph is described. Graph describes percentage of commuters, many types of mode. Maharaja, there are a lot of grammatical errors in your sentence structure in your introduction. So I would really request you कि आप grammar के videos देखो on the our grammar playlist या फिर आप personal class attend करो जिसमें आपका grammar enhance हो सके, because there are a lot of silly grammatical errors which need to be rectified. Okay? Shehnaz, sorry we don't run the live sessions for GT students. You can find videos on our channel regarding GT students. Okay. Jia, the given graph illustrates the proportion rate. Again, proportion के साथ rate नहीं लिखोगे, only proportion of travelers using various mode of transportation including, not include, including train, car, tube, bus in London in year this is. Okay, rest it is correct. Dave, this bar graph क्यों? The bar graph demonstrates the proportion of travelers utilizing these modes of transport. So introduction आप कभी भी past form में नहीं लिखते हो, it should be in the present form, right? So utilizing various kind of public and private transport facilities in London during 1960, उसके आगे 80, 2000 and 2010. Right? Rest
इंट्रोडक्शन आपने अच्छा लिखा है, सिनोनिम्स यूज करने का ट्राई किया है, बट देयर आर फ्यू मिस्टेक्स। ऑलराइट, सो किसी ने ओवरव्यू लिखा है अभी तक? ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी आंसर्स, आई एम सो सॉरी, आई कुड नॉट रीड, आई विल नॉट बी एबल टू रीड ऑल ऑफ देम, सो आई एम सॉरी अगर अब किसी का मिस हुआ है। आई like try to read few more of them, but I won't be able to read all of them, right? So I hope कि जितना मैंने अभी तक explain किया है उसमें आपको आपकी mistakes समझ में आ गई होंगी, right? So in overview, Prab, overall this graph indicates the growing use of cars for commuting to work between 1960 to 2000, okay, and corresponding decline in the popularity of buses. Very nice. So usage of car is increasing and usage of bus is decreasing. बस आपने ईयर गलत लिखा है, 1960 से 2010 तक आना चाहिए, आपने 2000 लिखा है, प्रभ, राइट? सो मेक दैट चेंज। बरकत अली, इन ओवरऑल कार इज मोर used in year 2010 and in 1960 less use of car by passenger. Now बरकत, see in overall, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको एक ऐसी चीज लिखनी है जो सभी के डेटा को कवर करे, या ट्राई करे कि आप मैक्सिमम डेटा कवर कर सको, राइट? इन दिस केस व्हाट यू हैव रिटन, आपने सिर्फ कार का डेटा बताया इन 1960 एंड 2010, राइट? व्हाट अबाउट ट्रेन, व्हाट अबाउट ट्यूब, व्हाट अबाउट बस? जो प्रभ ने लिखा था कि कार का यूजेज इंक्रीज हो रहा है थ्रू आउट द पीरियड एंड बस का यूजेज डिक्रीज हो रहा है, तो कार के उसने 4 साल के डेटा बताए एंड बस का भी 4 साल का डेटा बताया, राइट? सो ही इज ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जबकि आपके ओवरव्यू में आई एम जस्ट सीइंग द 2 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जस्ट 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बरकत ट्राई करो कि आपका ओवरव्यू ऐसा हो जो मैक्सिमम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या मैक्सिमम ट्रेंड को कवर कर सके, right? Rather than just focusing on one single type of transport या one single year. Okay, so Prab, you have observed it in a really nice manner. Okay, anyone who has written overview? Deepthi, overall it is evident that all years there was fluctuated trend in proportion of travels who use different means. Deepthi, again पूरे में फ्लक्चुएशन नहीं है, अगर आप ध्यान से कार एंड बस को ऑब्जर्व करो, सो देयर इज एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो आप सबका फ्लक्चुएशन नहीं बोल सकते हो, ओके? MM Builders, the broad assessment of the graph reveals that car was the highest mode of transport used by London people, whereas train was the least. Okay, but you have to mention year in this particular case, क्योंकि कार भी at point of time least था and बाद में ज़्यादा हुआ, and बस भी एक point of time it was highest and बाद में कम हुआ, right? So here you have to mention the year, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो, but इससे better होगा जो प्रभ ने लिखा था कि एक trend बता दो, okay? Sandeep, overall number of cars being used by traveler has increased significantly over successive years, while in the case of buses it has been decreased. Other modes of system remains nearly same. Okay, correct Sandeep. Again similar kind of observation, आपने other modes को भी include कर लिया, so that's a good कि आप पूरा overall content बता दे रहे हो, right? So I hope by now you are clear कि आपको introduction में क्या लिखना है and आपको overview में क्या लिखना है. I will just show you a sample कि उसको किस तरीके से frame करना है, okay? So the column graph, so in place of bar graph you can also write the word column graph, compares the percentage of Britishers. Now the people who live in London उन्हें Britishers भी कहा जाता है, ठीक है? So the column graph compares the percentage of Britishers who used train, car, tubes and buses in 4 different years. अब मैंने introduction में years mention नहीं किए, आप कर भी सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स गुड अगर आप मेंशन करो, राइट? मैंने यहाँ पर नहीं किया है, बट आपने किया है तो इट्स गुड, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, राइट? सो कॉलम ग्राफ ये कंपेयर कर रहा है कि 4 ब्रिटिशर्स जो है ये 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 4 डिफरेंट ईयर्स में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? सेम फॉर ओवरव्यू, द यूज ऑफ प्राइवेट कार्स रोज ड्रास्टिकली while the popularity of public buses dropped sharply, right? So private car का use rose drastically, बढ़ा है in the respective years, and बस का use क्या हुआ है? drop हुआ है, decrease हुआ है, reduce हुआ है sharply, right? So मैंने ये 2 vocabularies यहाँ पर include किए,
So any particular doubt in introduction or overview, you can ask in the chat section. Neha, overall in 1916, mostly people used tube and buses. Okay. While in 2010, people use more car. ठीक है, चलेगा. That also you can write. Ritika, overall car was convenient for people, whereas bus was at least over the time. Now convenience की बात आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो रितिका. कौन कितना यूज कर रहा था यही आपको लिखना है. आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया कि ये ज्यादा कन्वीनियंट था या ये कम कन्वीनियंट था, तो आप वो वर्ड यूज नहीं करोगे. पीपल उससे ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे. ऐसा भी हो सकता है कि कन्वीनियंट नहीं था फिर भी करना पड़ रहा था, राइट. सो आप कन्वीनियंस आप अपना ओपिनियन इंक्लूड कर रहे हो, जो कि आप राइटिंग टास्क 1 में नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो कौन क्या ज्यादा प्रेफर कर रहा था ये आप यूज करोगे, कन्वीनियंस वर्ड आप यूज नहीं करोगे, राइट. Okay, so any other doubt in introduction or overview, you can ask in the chat section. Otherwise, we will move forward to the body paragraph. Guys, I would request you, please don't chat unnecessarily in the chat box, because it's difficult for me to read the important information. किसी की important in like कुछ task लिखा हो या किसी ने कुछ doubt पूछा, it's difficult for me to identify which is the important information and which is useless. So please don't write bullshit in the class, otherwise I'll have to block you. Okay. Rashmi, overall the highest number of passengers traveled by car in year 2010, but this was very less in 1960, and train and bus passengers were same in the year 1980. Okay, train and bus passenger were same in 1980. Okay, yes, you can write that as well. Nice observation. But again, it will be just focus on one particular year and two particular mode of transport. इससे better आप अगर पूरा trend बता दो, so that will cover the overall perspective. Okay, so Jatinder, drastically means at a very big rate. काफी बड़े हद से या काफी ज्यादा extent से अगर वो कम या ज्यादा हो रहा है, तो आप drastically, dramatically, sharply, exponentially ये सारे words use कर सकते हो. Okay, अगर थोड़ा सा change है तो आप gradually या steadily, gently ये words use करोगे. Alright. Mona, I hope the doubt is clear. Rose drastically मतलब rose is the past form of rise. Rise का past form is rose, और drastically means suddenly वो बढ़ गया. Okay. Alright, so now let's move to the body paragraph 1. As can be seen, roughly 7% of commuters used private car. Now body paragraph के लिए मैंने क्या किया है, I've divided in the information. मैंने दो modes of transport पहले लिए and दो modes of transport बाद में लिए हैं, right? So as can be seen, roughly 7% of commuters used private car in London in 1960. So सबसे पहले मैं कार की बात कर रही हूँ. कार से 7% of commuters travel कर रहे थे 1960 में. In this year, the highest percentage of travelers in London used buses and tubes, approximately 35% and 27% respectively, right? So इस साल में जो buses and tubes use कर रहे थे वो लोग थे 35% and 27%. So मैं सबसे पहले 1960 का केस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. 1960 का see, in this case you can divide information in two parts. या तो आप दो mode of transport पहले ले लो and दो modes of transport बाद में, या तो फिर आप दो year पहले ले लो and दो year बाद में in the body paragraph 2. So these are the two ways you can divide your information, right? Here I am dividing it in terms of years, not in the terms of transportation. So सबसे पहले मैंने 60 की बात की कि कार को जो यूज कर रहे थे वो 7% लोग थे, ट्रेन्स अराउंड 15 to 18%, buses around 35% and ट्यूब के लिए था ऑलमोस्ट 25% से थोड़ा ऊपर 28% के आसपास, राइट? सो द पीपल हु यूज्ड buses and tubes were approximately 35% and 27% respectively. So 1960 में पहले मैंने सबसे पहले कार का डेटा बता दिया, देन मैंने buses and tube का डेटा बता दिया. ट्रेन यूजर्स इन दिस ईयर comprised around 17% of total passengers. इस ईयर में जो ट्रेन यूजर्स थे वो थे अराउंड 17%. सो 1960 के मैंने चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के डेटा को प्रोवाइड कर दिया. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर.
So after 20 years, so in place of writing 1980, मैंने लिखा after 20 years because that's a gap of 20 years. After 2 decades भी लिख सकते हो, right? 10 years के 2 decades हैं, right? So after 20 years, the percentage of car users dramatically increased. Again, dramatically increased मतलब suddenly बढ़ गए. कार यूजर्स जो थे आफ्टर 20 years सडनली बढ़ गए, एंड 1 out of 5 लंडनर्स, नाउ लंडनर्स मीन्स द पीपल अगेन हु लिव इन लंडन, ठीक है? सो ब्रिटिशर, लंडनर, ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो फॉर दिस थिंग, राइट? सो आफ्टर 20 years वो नंबर अगेन बढ़ गया, एंड 1 out of 5 पीपल, यानी कि 5 में से एक, दैट मीन्स अराउंड 20% पीपल यूज्ड दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? सो कार का डेटा हम देखते हैं इन 1980 इट इज मोर देन 20%, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 1 out of 5, okay, in 1980. And then trains, buses and tubes received a similar percentage of passenger in 1980 that ranged from 23% to 26%. Now in this year जो ट्रेन, बस एंड ट्यूब में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली सेम थे, एंड दैट वर रेंजिंग, आप एक रेंज बता सकते हो कि 23 से 26% के बीच में वो रेंज कर रहे थे. सो इफ यू सी 1980 में कार्स का मैंने सबसे पहले बता दिया, उसके बाद अराउंड 26-27 के आसपास ट्रेन का परसेंटेज है, अराउंड 24-25 के आसपास ट्यूब का परसेंटेज है, एंड अगेन 26-27 के आसपास बस का परसेंटेज है. जैसा कि रश्मि ने मेंशन किया था कि 80 में ट्रेन एंड बस का डेटा इज ऑलमोस्ट सेम, तो वो चीज़ मैंने बॉडी पैराग्राफ में लिखी है, राइट? सो इट वाज ऑलमोस्ट सेम एट 23 to 26%. ओके, सो आई होप दिस बॉडी पैराग्राफ इज क्लियर. नाउ इसमें मैंने खाली 1960 एंड 1980 का डेटा बताया, आगे का डेटा आई विल मेंशन इन द बॉडी पैराग्राफ 2. ओके, सो इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. सुमिया, कम्यूटर्स मीन्स ट्रैवलर्स और पैसेंजर्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, Jyoth, don't worry, it will be good. You will be doing good. All right. Any other doubt in this particular paragraph? All right. I can't find any other doubt. Let's move to body paragraph 2. Now, अभी तक हमने 1960 and 1980 की बात करी थी. Now we will talk about 2000 and 2010. So, however, the ratio of these transport user in 2000 changed noticeably. अब ये जो डेटा है वो 2000 में noticeably change हो रहा है, मतलब काफी हद तक जो noticeable change है उतना change हो रहा है. Every passenger out of 3 used their cars while 1 out of 4 used tubes for their movement. Now every passenger out of 3 मतलब 1/3, that means around 33%. 33% के आजू बाजू का फिगर हो तो आप every passenger out of 3 लिख सकते हो या 1/3 लिख सकते हो, right? Again 1 out of 4 का मतलब होता है 1 out of 4, that is 20%, right? So 20% के आजू बाजू का डेटा हो तो आप 1 out of 4 लिखोगे. Sorry, 25%. I'm so sorry, not 20, 25%. So 1 out of 4, right? So every passenger out of 3 used their car while every 1 out of 4 used tubes. किसमें? 2000 में. So 2000 में अराउंड देखो ये 33 के ऊपर का डेटा है इसलिए इसको मैंने 1/3 लिखा है, एंड ट्यूब का 25% पे है तो इसे मैंने 1/4 लिखा है, राइट? Used tubes for their movement. The popularity of train somewhat decreased while the ratio of bus commuters dropped sharply to only 15%. ट्रेन वालों की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, whereas बस का जो था पॉपुलैरिटी वो काफी हद तक रिड्यूस होके 15% पे आ गया, राइट? सो that is what I have mentioned, it reduced to only 15%. ये हो गया 2000 का डेटा. Now at the end 2010 की बात करें, so in 2010 around half of the Londoners, that means half of the people who live in London used cars as primary mean of transportation, while less than 15% used public transport. 50% से ज़्यादा, that means more than half या around half of the people use the car. So if you see कार का figure is almost 45 के भी ऊपर है, इसलिए मैंने almost half लिख दिया उसे, right?
So, around half of the Londoners use cars as the primary means of transportation, while less than 15% use public transport. जो public mode of transport था वो only less than 15% people were using. The popularity of tubes and trains reduced gently in this year as well. Tube and bus की popularity again थोड़ी सी reduce हुई. So exact number मैंने नहीं दिया, खाली जो उसके previous years थे वहाँ से थोड़ी थोड़ी reduce हुई है, इस तरीके से मैंने लिख दिया. ठीक है? So this is how I have framed my body paragraph 2. Any doubts in this particular thing? If you have any doubt, please ask me. Comprise here means मतलब उसका डेटा उतना है, अराउंड इतना है, सो वो बताने के लिए आप वर्ड यूज करोगे comprised. The train user in year comprised of, मतलब इतना लोग थे जो उस ईयर में ट्रेन्स को यूज कर रहे थे, राइट? सो वो बताने के लिए आप comprised वर्ड यूज करोगे. ओके, 1 out of 5 means 20%. 1 out of 5 is 20%, 1 out of 4 is 25, and 1 out of 3 is 33. Okay. Any other doubt in this particular question type? Yes, Barkat, 1/4 is a quarter and 25%. नोटिसेबल गगनदीप मतलब कोई भी चीज जो इजीली नोटिस हो सकती है, तो काफी बड़ा सा चेंज है तो हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, तो वैसे केस में आप लिखोगे नोटिसेबल. ठीक है, ड्रास्टिक, ड्रामेटिक, शार्पली, एक्सपोनेंशियली, ये वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो. ओके, Ritika, 1 out of 5, again it's 20%. Alright, so this is a live session, so it will not be stored in our library, our YouTube channel. So if you wish to see this video again, you have to like the video, then only it will be stored in your library, or you will get the PDF or PPT of this entire task in the Telegram channel, right? Our Telegram channel is IELTS_made_easy. So just download the Telegram app and search for this name. You will get our channel. So there we update our daily study material of reading, writing, vocabularies, speaking, listening. So whatever modules are conducted in the class are updated on the Telegram channel. Okay. Harpreet, no, the word counts are not counted precisely, but it should be above 150. If that is below 150, they will be able to identify that it is below 150. अगर 150 से आपने ऊपर लिखा है, then it will not be like उतना उसका मैटर नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगा. 150 के ऊपर आपको एटलीस्ट लिखना है, राइट? सो यू डोंट नीड टू काउंट एवरी वर्ड इन द एग्जाम. आपको एक रफली आइडिया आ ही जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे कि मुझे इससे ज्यादा वर्ड्स या इससे ज्यादा लाइंस लिखनी है. दीप सिंह, हाफ बाय कार, बिकॉज सी ऑलमोस्ट 46% के आसपास लोग कार यूज कर रहे हैं. सो ऑलमोस्ट हाफ आप कह सकते हो, इट्स अराउंड हाफ या अप्रोक्सीमेटली हाफ या रीचिंग हाफ या जस्ट बिलो हाफ, इस तरीके से आप उसे लिख सकते हो 50% को. ओके, ऑलराइट. रफली, नगिता, अगेन मीन्स अप्रोक्सीमेटली. सो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो हम रफली, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, नियरली ये वर्ड यूज करेंगे बिफोर राइटिंग अवर परसेंटेज. ओके. Alright, so apart from this, we also have our paid personal online classes where we take one-to-one personal sessions with the students. In those sessions, we evaluate your writing task and speaking task one-to-one. We also assist you for any queries related to listening and reading. So if you wish to join those class, you can WhatsApp on the given number on the screen, that is 73470 81010. Right? So if you wish to attain the assured results, please contact on the number given on the screen. Okay, so I can't find much of the doubt. Prab, gently means बहुत slowly,
या धीरे से स्टेडीली कोई काम हो रहा है या कोई डेटा चेंज हो रहा है, सो उसे हम जेंटली कहते हैं। सिमरन, ड्रामेटिकली अगेन ड्रास्टिक या सडन चेंज है, सो उसे ड्रामेटिक कहते हैं। Okay, so I hope now all the doubts are clear. I can't find much of the questions. So all right guys, have a good night and we will see you all tomorrow at the same time with another task. Till then,